Assalamu alaikum. Hello viewers. Once again, welcome to my continuation lecture number 2. तो एंटी मलेरियल ड्रग्स में आज हमारा जो कंटिन्यूएशन लेक्चर है वो एंटी मलेरियल ड्रग्स के हवाले से हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा क्विनीन को। तो क्विनीन जो है, क्विनीन इज़ अ मेडिकेशंस यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया एंड बेबियोसिस। This includes the treatment of malaria due to Plasmodium Falciparum, that is resistance to chloroquines when artesunate is not available. क्विनीन जो है इसके ज़रिए हम मलेरिया ट्रीट कर सकते हैं और इसके अलावा बेबी सियोसिस। इसमें ज़्यादातर क्विनीन जो है they are specially used against Plasmodium falciparum. लکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلو چې یاره زموږ سره موسٹ کامن فارم چې کوم دی نو هغه زموږ سره پلازموډیم فالسیفیرم دی او دا ډېر مطلب دا دی آلموسٹ 75% چې کوم دی دا په هیومن بلډ کې راځي. دیٹ از ریزسټنس ټو کلوروکینز. کلوروکین چې کوم دی کلوروکین ته دا ریزسټنس دی نو که پرس کا لیٹ سپوز دا اویلیبل نه نو بیا مونږه مطلب دا دی یو الټرنیټ برانډ چې کوم دی هغه مونږه استعمالولی شو. While used for restless leg syndromes, it is not recommended for this purpose due to risk of side effects. इसके अलावा और भी कुछ साइंड्रोम्स हैं, ठीक है, जिसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज़ वी नो दैट के इस ड्रग ने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो है रिपोर्ट किया है, ठीक है ना। ज़मू सरदा मुख्तलिफ साइंड्रोम्स के हमदा इस्तेमाली की खुदा मंग न रिकमेंडेड का ज़्यादातर चेहरा दी कि साइड इफ़ेक्ट्स दे ढेर ज़्यादा थी। दा क्विनीन खबर कोमा नो दा फाल्सिफेरम खिलाफ हम इस्तेमाली की टिक्शुला और दा क्लोरोक्विन ते चिकम दे नो दा रेजिस्टेंस थी टिक्शुला नो इट कैन बी टेकन बाय माउथ ओरली दा मंगा अखलू और यूज्ड इंट्रावेनसली भी हम यूज़ कर सकते हैं. मलेरिया रेजिस्टेंस टू क्विनीन अकर्स इन सर्टन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के मतलब दा सी मुख्तलिफ डिफरेंट एरियाज तले चाहे कि दा मलेरिया चिकम दे स्पेशली दा क्विनीन ते चिकम दे नो दा रेजिस्टेंट था. Quinine is also the ingredient and tonic water that gives it its bitter taste. Quinine चिकम दे दागे चिकम ingredients थी, ठीक दा नो स्पेशली आगा चिकम दे bitter गुंते टेस्ट वर्काई, थ्री गुंते टेस्ट वर्काई, दा यो physical property दा. मख्की दे सर के मुंगे उसिस डिस्कस को क्विनीन इज़ अ मेडिकेशन यूज टू ट्रीट मलेरिया और दिन अलावा चिकम दे नो बीबी सियोसिस चिकम दे दा ज़मूं सर यो रियर और लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन दे द रेड ब्लड सेल्स चागा ज़मूं सरा स्प्रेड कीगी द सप ज़रिया बांधे द टेक्स पर ज़रिया बांधे ठीक बोला लगा संग प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स दे टेक्स. It is caused by tiny parasites. आगा parasites नुम दे बारबीसी आगे तवेले कीगी और दा चिकम दे ज़्यादातर मतलब दा दे पर ह्यूमन बींग्स की चिकम दे हम दा इन्फेक्शन कास कहीं दा दे अटैक चिकम दे नो दा पर रेड ब्लड सेल कीगी पर आरबीसी बनने कीगी, ठीक है ना. तो ये आपके रेड ब्लड सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है. वैसे जो एंटी मलेरियल ड्रग है इसका जो अटैक एरिया होता है आपका आरबीसी है, ठीक है. दिन अलावा बमूंगा हिस्ट्री तरफ तलाश रू. हिस्ट्री में क्विनीन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड इन 1820. क्विनीन जो है सबसे पहले वो आइसोलेट हुआ था 1820 को फ्रॉम द बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री. सिनकोना चिकम दे सिनकोना यो ट्री द चिदा दागे द बार्क न चिकम दे स्पेशली दागे चिकम चिलकवा नो दाई दागे ना एक्सट्रैक्ट करियो. So quinine was for the first time extracted or isolated in 1820 from the bark of cinchona trees. Bark
extracts have been used to treat malaria since at least 1632. So it is on the World Health Organization list of essential medicines and the most effective and safe medicines needed in the healthcare system. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसको एसेंशियल मेडिसिन्स लिस्ट में शामिल किया गया है और बहुत इफ़ेक्टिव और सेफ मेडिकेशंस है हेल्थ केयर सिस्टम में. मोड ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्विनीन. अब क्विनीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह ये काम करता है. क्विनीन इज theorized to be toxic to the malarial pathogens. Da chikam de da derzia toxic de matlab da re de malarial parasite chikam de pasana wani killing kai. Plasmodium Falciparum, as we know that by interfering with the parasite's ability to dissolve and metabolize hemoglobins. Actually इस प्लाज्मोडियम पाल्सिफेरम का काम ये होता है कि ये आपके रेड ब्लड सेल को क्या करता है, आपके रेड ब्लड सेल पे अटैक करता है और ये कॉज करता है हेमोलिसिस रप्चरिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स. तो ये क्विनीन जो है इतना टॉक्सिक होता है कि ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के ग्रोथ को क्या करता है, स्टॉप करता है, उसके साथ जो है ठीक है इंट्रैक्शन करता है. तो स्पेशली देन दीज पैरासाइट्स दे आर अनेबल टू मेटाबोलाइज द हेमोग्लोबिन, क्योंकि इसका जो डायरेक्टली अटैक होता है वो हेमोग्लोबिन पे होता है, एचबी पे. ठीक है, तो वो क्या करता है आपके हेमोग्लोबिन को ठीक है एचबी को डिस्ट्रॉय करता है. ठीक है ना, उसके चेन को ख़त्म करता है. As with other quinolines or quinolones anti-malarial drugs, the mechanism of action of quinine has not fully resolved. Simple mechanism da de chera zamung sara da Plasmodium falciparum chi kam de da zamung sara और बीसी खुरी रेड ब्लड सेल खुरी ठीक दा नो एकल चे मंगा क्विनीन वर्को नो क्विनीन चिकम दे दा पैरासाइट चिकम दे प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम और बीसी माते दलु त न प्रीरी ठीक दा kana नो आगा तबिया हेमोग्लोबिन एचपी हेमोग्लोबिन चिकम दे आगा नशी मेटाबोलाइज का वाले ठीक ता के चिदा दागे बिल्कुल यो फूड होती भी नो एक्चुअल डिफरेंट मैकेनिज्म्स दी डिफरेंट लिटरेचर्स रिपोर्ट करी दी. This model involved the inhibition of zoin biocrystallization and heme detoxification pathway. So the same case is here. So it caused inhibition of the hemozoins biocrystallization is the same case with that it caused hemolysis, rupturing of red blood cells, especially at the level of your RBC red blood cells, and got detoxification pathway which facilitate the aggregation of the cytotoxic hemes, which can facilitate the aggregation of cytotoxic hemes. चिकम जमुक सरा cytotoxic चिकम hemoglobin दागे मतलब आगा दागे एग्रीगेशन चिकम दे आगा फैसिलिटेट का. एग्रीगेशन का मतलब ये होता है जमा होना. ठीक है, आप साइटोटॉक्सिक हीमीन चिकम जमुक सरा साइटोटॉक्सिक हीम दी ठीक है, हीमी वही ब्लड था, साइटोटॉक्सिक वही टॉक्सिसिटी था. लका संग चिमावे दे हेमोलिसिस कई आरबीसी रप्चरिंग कई ठीक वाला. Free cytotoxic heme accumulates in the parasites. चिकम जमुक सरा free cytotoxic heme दी ठीक दा स्पेशली नो दा जमुक सरा पदे पैरासाइट्स पानी जमा की एंड इट कॉजिंग देयर डेथ. और फिर वो क्या करता है ठीक है इस माइक्रो स्पेशली प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम जो है ठीक है दे डेथ कॉज की. क्विनीन में टारगेट द मलेरिया प्यूरिन्स. क्विनीन जो है इसका एक और मैकेनिज्म ये भी है कि इट कैन डायरेक्टली टारगेट द मलेरिया प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फास्फोराइलेज एंजाइम. सो इसका एक काम ये भी कि ये मलेरिया का जो प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड होता है ठीक है फास्फोराइलेज ये एक एंजाइम का नाम है, तो ये उसको टारगेट करता है. ठीक है ना, क्योंकि एंजाइम का काम ये होता है कि वो सिस्टम को ठीक है बॉडी को ठीक है या रिएक्शन को वो एक्सेलरेट करता है. सो क्विनीन में आल्सो टारगेट द मलेरिया प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड. तास तो भैया दी न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स दा मुंगा डिस्कस करी वो ठीक दा नो दा जमुक सरा सदी दे जमुक सरा एक्चुअली दगा एंजाइम्स चिकम दे आगा टारगेट काई.
न्यूक्लियोसाइड्स मंग वीली उचिता जमु सरा स्ट्रक्चरल सब यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए और आरएनए मतलब दागे सिंथेसिस पदगे प्लाज्मोडियम पाल्सिफेरम की चे कम दे सिंथेसिस न की उच सिंथेसिस की नो मुतबा मसले जोड़ेगी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया इट शुड बी अच्छा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इन इट शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन आर्टिमिसिनिन आर नॉट अवेलेबल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया जो है वो ये है कि अगर हमारे पास आर्टिमिसिनिन जो है वो अवेलेबल ना हो तो क्विनिन इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट ल्यूपस एंड अर्थराइटिस भाई ये नहीं है मतलब इस ड्रग के ज़रिए हम जो है मल्टीपल कंडीशन हम ट्रीट कर सकते हैं इन द पास्ट डिकेड्स quinine was frequently prescribed as the off-label treatment for the legs cramps at night but this has become less common due to food and drug द मख के मुख्तलिफ ट्रीटमेंट दपार इस्तेमाल दो लेकिन लेग्स क्रैम्प्स पके दो ठीक शो लेकिन ना अर्थराइटिस दपार बदा इस्तेमाल दो ठीक द पे but this has become less common where the abundance चिकम देर ज़्यादा कम शो ठीक शो ला the food of the drug द वजन अंदागे द वजन अभिया administration warning that this practice is associated with life threatening side effect और सबसे जो मेजर इशू हैं इसके काफ़ी एडीआर भी हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी हैं साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं तो इसलिए इसको बहुत एहतियात से यूज़ करना चाहिए कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स इंक्लूड हेडेक ringing in the ear, trouble seeing and sweating. Most severe side effects include the deafness, low blood platelets and their irregular heartbeat. The side effect report से भी the platelet count हम कमाई the दिन अलावा irregular heartbeat राजी the दिन अलावा नोर हम मतलब complication जोड़ाई use can make one more prone to sunburns और ख़ास कर नूर तक कम दे सड़े की नहीं कहना नो है कि आओ ब्या दे इस्तेमाल के नो मुख्तलिफ मसले राजी while it is unclear if used during अगर प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ किया जाए so it is harm to the baby तो ये प्रेगनेंसी में भी भाई contraindicated है ठीक है यूज़ नहीं करना चाहिए it is used to treat malaria क्योंकि हमारे पास और चॉइस भी है क्लोरोक्वीन है बेसोक्वीन है नेवोक्वीन है and to treat malaria during pregnancy it is still recommended अच्छा मैं इसको रिकमेंड नहीं करता ठीक है क्विनीन इज एन अल्कलाइड क्विनीन हमारे पास एक अल्कलाइड है विच इज नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स दैट इज ऑलरेडी दैट इज एग्जिस्ट एंड ऑल द केमिकल कंपाउंड्स हाउ इट वर्क एज अ मेडिसिन इज नॉट इंटायरली क्लियर्स दैट इज स्टिल नॉट क्लियर्स Contraindications quinine cause hemolysis and G6PD deficiency and inherited deficiency but this is risk and small and the physician shouldn't hesitate to use quinine in the people with G6 deficiency when there is no alternative. Quinine जो है इसका एक और इफेक्ट जो है वो G6PD पे जिसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज रिडक्टेज कहते हैं तो क्विनीन जो है ये क्या करता है ये हेमोलिसिस करता है रप्चरिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स दे जमू सरा सकाई दे G6PD डिफिशियंसी चिकम दे क्विनीन चिकम दे जमू सरा हेमोलिसिस कई ठीक है रप्चरिंग ऑफ रेड ब्लड सेल कई पर G6PD डिफिशिएंट पीपल की चिपागो के द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज रिडक्टेज चिकम दे द इनहेरिटेड द पैदाइशी तौर पर चिकम दे द द्यूपदे ब्लड की चिकम दे दैट इज डिफिशिएंटी बट दिस रिस्क इज स्मॉल द दुम्र दगनवी एंड द फिजिशियन शुडंट हेसिटेट टू यूज क्विनीन एंड द पीपल चाहता आगे कसान चाहो तो G6PD डिफिशिएंसीज भी नो मतलब फिजिशियन चिकम दे का दिवता फॉर एग्जांपल क्विनीन रिकमेंडेड कि नो सा इशू निश्ता व्हेन देयर इज नो अल्टरनेटिव क्विनीन डिसकंटिन्यू इमीडिएटली व्हेन हेमोलिसिस अपीयर कचरी हेमोलिसिस की तो फिर इसको स्टॉप करना चाहिए और इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दादी की Chloroquine, this is another malarial agents. Chloroquine is a medication which is used to prevent and to treat malaria in the areas where the malaria is known to be sensitive to its effects. बस जगुन दिसी चेयर अलता मतलब दारे दा मलेरिया चिकम दे दागे दा प्रेवेलेंस चांसेस ज़्यादा भी कना नो दा क्लोरोक्वीन चिकम दे दाम मंगा दा मलेरिया खिलाफ इस्तेमाल यो ड्रग दे certain type of malaria resistant strains and complicated cases typically require typical or additional medication कभी कभार हमें एडिशनल जो है एडिशनल ड्रग्स की भी ज़रूरत होती है ठीक है हम मतलब देखते हैं कंडीशन के मुताबिक जो है हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं
It is also occasionally used for amoebiasis. ये amoebiasis के खिलाफ भी हम यूज़ करते हैं, that is occurring outside the intestine, जो इंटेस्टाइन के आउटसाइड सर्वाइवल करता है, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस में और ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस में, ये सारे डिजीज़ जो हैं इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ टेकन बाय माउथ, ओरली भी हम इसको ले सकते हैं। Chloroquine is used to prevent or treat malaria caused by mosquito bites in a country where the malaria is common. So, where the malaria is common, so as usually this chloroquine is used to prevent or to treat the, used for the prevention of malaria. And we have already talked about that this is caused by Plasmodium parasite, which is called Anopheles mosquito. Malaria parasites can enter in the body through these mosquito bites, which is present in the salivary gland of that particular species, and then live in the body tissue such as red blood cells or the liver. The malarial parasites they entrance they mosquito bites पर ज़रिए बांधने they पर salivary gland की मौजूदी और दे भी आज़मूँगा मुख्तलिफ body tissues तज़ील का for example था RBC था red blood cell था और BC और देने अलावा hepatocytes liver This medication is used to kill malaria parasites living inside the red blood cells. The din alawa the medications the zamusara the malaria sakai the killing kai zamusara par BC ki red blood cell ki danana mojud And some cases you may need to take different medications such as Pharmacokineine. So while in some cases you can also use Pharmacokineine to kill the malarial parasites living in other body tissues. Both drugs may be needed for a complete cure and to prevent the return of infection relapse. मतलब दोनों ड्रग जो है वो हम नीड के मुताबिक वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम जो हैं जो फॉर एग्जांपल टू प्रिवेंट द रिटर्न ऑफ द इन्फेक्शन रिलैप्स चाहिए कि मतलब दार है कल जमूसरा मतलब जो दोबारा मुंग मतलब दार है इन्फेक्शन उनेशी Chloroquine belongs to the class drugs as known as anti-malarial. ये तो ऑलरेडी मैंने पहले भी मेंशन किया है. Side effects reported है blood visions मतलब दारे चेहरा सड़ी चिकम दे डिप्लोपिया कीगी अर्सीज व तद्वद वक़्कारी नज़र nausea vomiting सड़ा खराबी की vomiting राजी abdominal cramps खेटा मानी दर्द राजी headache भी diarrhea में आकर if any of these side effect if these effects persistence the side effects the prolonged or worse and tell your doctor or pharmacist promptly तो quickly फिर आपने जो health care provider को inform करना चाहिए. Remember that your doctor is prescribed this medication because he or she has judged that the benefit to you is greater than the risk of the side effect. तो उसने already judge किया कि आपको for example एक dose चाहिए, ठीक है, आप risk में हैं, तो especially then many people using this medication do not have serious side effect. ये अक्सर हम स्पेशली प्रोपाइलेक्टिक पर्पस के लिए भी ज़्यादातर फिजिशियन जो है वो मलेरिया का डोज जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है. अच्छा, क्विनिडीन हमारे पास एक और एंटी मलेरियल ड्रग है. Quinidine जो है it is a medication that it act as a class 1 anti-arrhythmic drug. याद रख ले कि क्विनिडीन जो है ये anti-arrhythmic drug में आता है, ठीक है, and hot, और ये जो है स्टीरियोआइसोमर है, ठीक है, ये क्विनीन जो है इसका स्टीरियोआइसोमर है and originally they are derived from the bark of cinchona tree. दा चिकम दे हम जमू सरा द cinchona tree ने चिकम दे दा derive शेवी दी. These drugs cause increase the action potential duration as well as prolong the QT interval. Da zan ne khabar da da drugs चिकम दे दा जमू सरा action potential चिकम दे आगाज से वाकई action potential असल की जमू सरा पदी कि मुंगा heart involve को the anti-arrhythmic drugs दे टिक्शुला the action potentials से वाकई दलू सरा चिकम दे QT interval बताओई the QT interval the prolong की QT interval चिकम दे no actually it is the time from the beginning of QRS complexes which representing the ventricular depolarization to the end of the T wave resulting from the ventricular repolarization. That's actually the heart चिकम activities दी अगर कि चिकम segment T, P, QRS, T, ST, TP
نو مطلب دا هغه ریپرزینټ کوي ټیک ده کنه ځکه خو دا موږ وایو چې کوینیډین زموږ سره انټي اریدمیک ډرګ دی. Mechanism of actions of quinidine. So quinidines or quinine act against the asexual erythrocyte forms and has no significant effect on hepatic form of malarial parasites. The hepatic malarial parasites خلاف د دې دومره کار نشته خو دې چې کوم asexual erythrocytes form دی ټیک ده نو دا زموږ سره څه کوي مطلب د هغې خلاف ډېر ښه کار کوي ټیک ده که نه چې کم زموږ سره کم پلازموډیم پالسیپیرم دی یا کم پلازموډیم پیراسایټ دی د هغې چې کوم ایسیکشول اریتروسایټس فارم دی نو هغه څه کوي د هغې اکټیویټي سټاپ کوي او باقي په لیور سره چې کم دی نو د دې دومره کار نشته دی. This drug is more toxic and less effective than chloroquine. क्लोरोक्विन अगर क्लोरोक्विन के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये टॉक्सिक भी है और लेस इफेक्टिव है व्हेन यूज्ड सिंगल अगेंस्ट अगर मलेरियल पैरासाइट के खिलाफ अगर ये फॉर एग्जांपल यूज़ किया जाए इंडिविजुअली तो इतना इफेक्टिव नहीं है. However, quinine along with its stereoisomer quinidine है especially valuable for parental treatment of Plasmodium falciparum. और इसी तरह Plasmodium falciparum के खिलाफ क्विनिन जो है वो हम स्टीरियोआइसोमर क्विनिडीन जो है उनके साथ जो है हम इन कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं ठीक है पेरेंटल ट्रीटमेंट स्पेशली प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के खिलाफ. Therapeutics uses of quinidine. So quinine and quinidine have historically been the treatment of choice for drug resistance and severe Plasmodium falciparum. Let's suppose if there is Plasmodium falciparum present in the RBC of the patient. So this quinine and quinidines this is the best treatment of choice for drug resistance. They are both orally or intravenously. Intravenously भी हम दे सकते हैं, orally भी हम दे सकते हैं. For enhance the efficacy of quinidines or quinine during the treatment of Plasmodium parasites and slower the blood schizonticides also provide tetracycline and clindamycin. The efficiency, the quinidine of the quinine, the efficiency बढ़ावलो द पारा چې कम दे स्पेशली द प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम खिलाफ چې कम ट्रीटमेंट दे ठीक दा नو दे په ब्लड کې چې कम दे शिंजोन्टोसाइड्स چې कम दे ټیکس ول دغه چې کم دی ریپلیکیشن د هغې خلاف هم ښه کار کوي پای کې ټیټراسایکلین دی او کلینډامایسین دی. Quinidine side effects some of the side effects of quinine and quinidines are high tone deafness ټیک ته که نه سړی आवाज ناوري ویژوال ډسټربنس راشي ٹھیک شو لکه نه لایک ډیپلوپیا بلډ ویژنز هیډیک راشي ډسپوریا راشي د دې نه علاوه نوزیا راشي وومیټینګ راشي نو مینی اینڈ مور کنډیشن داسې ډرګز نشته چې د هغې مطلب سایډ افیکټ نشته دی ټیک ده که نه نو ډسپوریا کې داسې سړی ډسسیټسفیکشن غوندې فیل کوي ټیک ده که نه ډسپوریا چې کوم دی دا د یوپوریا اپوزټ دی یوپوریا کې سړی ډېر ایکسایټډ یو ډېر زیات خوشحاله وي د دې نه علاوه پاسچورل هایپوټینشنس پکې کېږي ټیک ده که نه دا ټول سایډ افیکټس چې کوم دی دا زموږ سره ریپورټډ کړي دي. Mefloquine is another anti-malarial drug which is sold under the brand name Lariam among others. Lariam के नाम पे इसको सोल्ड किया जाता है ठीक है. It is a medication used to prevent or treat malaria. When used for the prevention it is typically started before potential exposure and continues for several weeks after potential exposures. Means it can be also used for the prophylactic purpose for the prevention of malarial attacks. So it can be also used to treat mild or moderate malaria के खिलाफ but it is not recommended for severe malaria में हम यूज़ नहीं कर सकते. It is taken by mouth orally हम ले सकते हैं. Fast acting erythrocytes, that is called fast acting erythrocytes, blood schizonticides but slower than CQ or quinines. Chloroquines Mefloquine چې کوم دی نو د دې ایکچولی ستا په بلډ کې چې کوم شیزونټوسایډس دي ټیک شوله نو دی د هغې خلاف ډېر ښه اکټیویټیز ښیي خو د دې اکټیویټي چې کوم دی مطلب دا دی بټ سلوور دین
सीक या और क्विनिन द एक्टिविटी च कम दे मतलब द बिया द क्लोरोक्विन और द क्विनिन कमजोरी दा it is effective against chloroquine sensitive as well as resistance plasmodium efficacious suppressive prophylactic for the multi resistance Plasmodium Falciparum यो खुदा ने चेहरा मंगा ढेर ज़्यादा इंतहाई ड्रग्स तख्पल लगना सेवा इस्तेमालों दागे दो जिन्हें बहु मंगता मसले राजी प्रॉब्लम्स मंगता क्रिएट कीगी Mefloquine history दारा जी Mefloquine was developed by the United States Army 1970 सबसे पहले जो है ये लॉन्च किया था 1970 and came into use in mid 1980 it is on the World Health Organization list of essential medicines and the most effective and safe medicines needed in healthcare system. It is available as a generic medications. Like chloroquine, so it accumulates an infected RBC, infected RBC when accumulate की and bind to the heme और ये जो है heme के साथ heme चूँकि protein है and this complex damage the parasite membrane और वो क्या करता है ये complex जो है ये उस पैरासाइट मेम्ब्रेन को डैमेज करता है हाउएवर और इसी तरह recent evidence suggested the site of action of Mefloquine is in the parasitic cytosol the soluble part of cytoplasm rather than the acidic vacuoles so ये भी एक एविडेंस उन्होंने शो किया है कि Mefloquine जो है इसका जो साइट ऑफ एक्शन है वो पैरासिटिक साइटोसोल है ददी दगा चिकम दे Mefloquine चिकम दे ददी टारगेट एरिया चिकम दे लका साइटोसोल लेकम त चिमुंग सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म वायु ठीक शो लका ना दाना चेहरा रादर देन द एसिडिक विक्यूल चेहरा अल तबजमु सर मतलब स्पेशली चिकम एसिडिक विक्यूल लेका ना स्पेशली पसेल ऑर्गेनेलिस की नो द एक्चुअली डायरेक्ट अटैकिंग एरिया चिकम दा दाजमु सर पैरासिटिक साइटोसोल दे पैरासाइट्स चिकम साइटोप्लाज्म दे पागे माने अटैक दे Mefloquine adverse effect at high doses it caused nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, bradycardia, depression and rare event of toxicity are seen. Da khabari razi BP down की bradycardia की heart rate कमी abdominal pain, depression razi. Common side effects include vomiting, diarrhea, headache and ration. Serious side effects include potentially long-term mental health problems such as depression भी इसमें आ सकता है hallucination, वहम गुनते, anxiety राजी, थकावट and neurological side effect such as poor balance, seizure राजी, टिक्शो लकाना, epilepsy and ringing in the ear, दे गुगुनों की आवाज़ राजी. It is therefore not recommended in the people with history of mental health problem. कोशिश करो जे Mefloquine मुंग आगे कसला नवर कोची चाहता खुदा न ख्वास्ता साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही मेंटल मसले भी आगत अब डिप्रेशन भी आगत एंजाइटी भी आगत एपिलेप्सी भी मिर्गी भी इट अपीयर टू बी सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड दस ये रिपोर्ट वही चेहरा लिटरेचर वही चेहरा दा जमू सरा पर प्रेगनेंसी की सेफ थे ठीक तक है ना एंड ब्रेस्ट फीडिंग Other drugs, Primaquine used for eradication of dormant liver form of Plasmodium Vivax and Plasmodium ovale. Primaquine चिकम दे दा dormant liver form of कम Plasmodium Vivax थे और द ovale खिलाफ चिकम दे दागे खई eradication कई दागे खात्मा कई. Pyrimethamine folic acid antagonist are also used in prevention. ये भी हम यूज़ कर सकते हैं pyrimethamine folic acid. उसके अलावा एटोवाकोन्स है, एंटीबायोटिक्स है, हेलोपेंट्रीन, हेलोमेपेंट्रीन्स हैं, आर्टिमिसिनी एंड इट्स डेरिवेटिव्स ये सारे हम यूज़ कर सकते हैं. तो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है वो एटोवाकोन्स या प्रोग्वानिल पे इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर एंटी मलेरियल पे. सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट मी. ठीक है जी. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर.